So, a very good afternoon. I welcome you all to the 17th action of 22 actions for biodiversity. Today's action is learn about biosafety. As the prevalence of genetically modified organisms continues to rise, and there has been an increasing public interest for information concerning the safety of these products, concerns generally focus on how the GMO may affect the environment or how it may affect the consumer. So, what are GMOs? What are its impacts? Our today's expert talk shall be talking about this. We have with us Professor K.C. Bansal, Secretary, National Academy of Agricultural Sciences, India, Member Board of Directors, Global Plant Council, Director General Pushpa Gujarat Science City, Dr. Nilima Jairath, and Shri Shirash Bapish, DGM Science City. I request Director General Pushpa Gujarat Science City, Dr. Nilima Jairath, to please welcome our guest. Ma'am, please. Thank you, Loveleen. Thank you so very much. Once again, a very good afternoon, Dr. Bansal. A very good afternoon to all the students and the teachers who have joined us today as well. Well, sir, as I was telling you, these past days, we have adopted this campaign for 22 actions for biodiversity, or specifically on these 22 days from 1st May to 22nd of May. The objective is to build a shared future for all. And who else could be better than students from schools and colleges, teachers, their mentors, as well as their parents. Well, sir, I would like to, especially for the children, I would like to start from the very basics. बच्चों, आप सबने अपने क्लासेस में DNA के बारे में पढ़ा है, RNA के बारे में पढ़ा है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा है. आप सबने पढ़ा है कि हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जीन्स डिटरमिन करती हैं, राइट? और ये जीन्स जब रिप्रोडक्शन होता है, आपको ये भी पता है, माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा है, सेल डिवीजन पढ़ी है, और उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि जब मियोसिस होता है तो उस टाइम जो या जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है, कुछ जेनेटिक मटेरियल मेल गैमीट से आता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल फीमेल गैमीट से आता है, और जो नया जाइगोट बनता है उसके कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट कैरेक्टर्स से डिफरेंट होते हैं. मतलब कुछ फीमेल से जो जेनेटिक मटेरियल आता है वो कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल से जेनेटिक मटेरियल आता है. तो ये एक जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आता है वो एक नेचुरल चेंज है. पर आज की डेट में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जहां पे कि हम जेनेटिक मटेरियल को वी कैन चेंज द जेनेटिक मटेरियल of a plant or an animal in the lab. And why do we do that? For example, if we want a plant which is resistant to pests, it's a high yielding plant, but it is prone to pests. So if we can add a few genes which make it resistant to pests, the productivity of the plant will increase a lot. Similarly, in this method, we can come up with plants and animals who are, for example, resistant to climate or to heat stress in the climate. So they are more climate adaptable. There can be plants which are salt tolerant. There can be plants which can tolerate floods. So all these characters, they are governed by genes, and those genes are picked up and added into the material where we want to add them. This is the most simplest way, and this is for the youngest of all students. This also has a lot of impact on our economy, because if we have good seeds, if we have seeds, for example, of a plant which is very high yielding and also climate resistant, drought resistant maybe, in that case, the yield of the plant will still continue to grow well. The yield would be better.
food would be enough, food would be produced, and it would also lead to improvement in our economy. So these are some of the issues why we have started doing this work. But at the same time, we must admit that there are some negatives also. And those negatives with respect to GMOs are usually with respect to pesticide, because there are some GMOs which are being developed which are resistant to various kinds of pests. So, and this is controlled genetically. So there are certain safety issues also which are being discussed, which are being considered, which are being undertaken. Studies are being undertaken on that. So this was the simplest what I could talk to you about GMOs. But then in recent years, this is a very, very important tool which we need to follow, which we need to adopt. And we have to adopt technology, we have to choose technology which maximizes the positive impact on the ecosystems and minimizes the negative impact on ecosystems and human health. So we have a very well-known scientist, Dr. K.C. Bansal, who is an expert in this area. He has been the director of National Bureau of Plant Genetic Resources. Now, for some of you who do not know, the National Bureau of Plant Genetic Resources is a huge organization which has got plant materials stored in cryogenic conditions for later use, for test, for use of their genes, for developing GMOs, positive GMOs, for helping us developing crops which are drought resistant or which are climate adaptable, etc. So he is also the secretary of the National Academy of Agricultural Sciences, and he is member of the board of directors of Global Plant Council. So a very senior scientist. Thank you very much, Dr. for accepting our invitation. A very, very warm welcome to you. Also a very warm welcome to all our little participants and their mentors, their teachers, and their parents if they are along with us. And I think we have a very interesting talk ahead. So I would not speak anymore. I think we need to hear to our expert who will tell you a lot of things which will make you think. So I also encourage you to ask questions after his talk. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for briefing our audience about the GMOs in a simple manner. I'm sure our audience will have a lot of takeaways today. So dear participants, we have Professor Bansal with us today as our expert speaker. Professor Bansal obtained doctoral degree with gold medal from the country's premier institute, the Indian Agricultural Research Institute. He pursued advanced research from Harvard University, Cambridge, USA. Since his return from USA, he occupied eminent positions as Professor Plant Biotechnology at IARI, New Delhi, coordinated National Project on Transgenics in Crops, and Director, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi. He was the first to get selected for the prestigious Norman Borlaug Chair for Crop Improvement by ICAR in India. He is on the editorial board of Plant Biotechnology Journal, UK. Professor Bansal has won several awards. To cite a few, the highest award of the ICAR for an individual's contribution, the Rafi Ahmed Kidwai Award, an award of the Indian Science Congress conferred upon by the Honorable Prime Minister of India, the prestigious Haryana Vigyan Ratna conferred upon by Honorable Governor and Chief Minister of Haryana. Recently, Professor Bansal was awarded the second highest award of the National Academy of Agricultural Sciences by the Honorable Minister of Agriculture, Government of India. I request Professor Bansal to please take over. Sir, please. Thank you. Thank you very much, first of all. And before I say further, I thought I should immediately go to my slides and save some time. And I'm very thankful to Dr. Nilima Jairath
and also to Dr. Loveleen Barar for giving me this opportunity to talk to all the young students. Actually, I'm so excited, to talk to the students and their parents. I'm looking forward myself to have kind of an interaction with them. And I hope, by the end of the talk, they will have some questions, as Madam Nilima mentioned very clearly, that we must ask questions. And once again, while thanking the Director General, Dr. Nilima Javed, and Dr. Loveleen Barar, and all other scientists of the Pushpa Gujarat Science City, I congratulate them all for this 22 actions program, which they're running right from May 1 to May 22nd, which happens to be the World Biodiversity Day. So I take this opportunity as well to wish you all a very happy Biodiversity Day, how important it is for particularly a country like India, which is so rich in biodiversity. Actually, we are one of the richest nations in the world when we talk of biodiversity. And as Madam just pointed out, both Dr. Loveleen and Dr. Nilima, that we have students and the parents, and I welcome them to my presentation. And particularly, I'm very happy to talk to my dear, very young students, and of course to their parents as well, to their mentors, to their teachers if they're there. And I welcome them all to my presentation. And जैसा मैडम ने कहा, शायद मैं कोशिश करूंगा बीच-बीच में हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, whatever language I can switch over to, I will try to convey a message. And बीच में भी अगर आपको किसी को question है, आप note कर लीजिए, and I will be very happy to clarify, because this is a very important topic, which Dr. Nilima and Dr. Loveleen have chosen. And in fact, I call them a GM crops, particularly because that's the area of research which I have been, working on for the last several years. So instead of calling them GMOs, of course, genetically modified organisms, which they will all be considered like animals or microbes or any kind of a tissue, whatever we talk about it, but then mostly, of course, crops. Crops could be horticultural crops, agricultural crops, and any kind of a crop. We can, take up this technology for developing, GM crops to the process of genetic engineering, as we call it, or development of transgenics as well, we call them as, GM crops. So before I go further, मैं आपको थोड़ा सा एक background दे देना चाहता हूँ कि हमें, जैसे मैडम नीलिमा ने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि हम लोग ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है और इसका क्या मतलब है। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी बताऊंगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही अकेला एक रूप नहीं है कि जिससे हम लोग अपनी क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं। हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टूल भी है जिसके द्वारा भी हम अभी भी आज के दिन भी अपनी क्रॉप्स को इंप्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। So I think I will go further and in fact try to address the needs, the human and societal needs, actually speaking, कि क्या हमें साइंस बेस्ड एडवांसेस जो हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजीज नई नई बन रही हैं, उनकी हमें क्या जरूरत पड़ती है कि ऑलरेडी जो हमारे पास कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे आज हम इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट हैं, और कंपैरेटिवली डूइंग मच बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज विद रिगार्ड टू फूड प्रोडक्शन, बट फिर भी हमें ये नई टेक्नोलॉजीज की साइंस बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग और आजकल जीनोम एडिटिंग की हम बात कर रहे हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। वो इसलिए कि देखिए, हम लोगों को एक तो फूड अवेलेबिलिटी हमेशा सबको चाहिए और एक अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी मतलब इतना प्रोड्यूस करे कोई भी कंट्री कि वो एक ठीक प्राइस में सभी लोगों को मिले, और वो सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं हम प्रोड्यूस करें। अब तक हम लोग अपने देश में सिर्फ क्वांटिटी की ही ज्यादा बात करते थे, बट आई थिंक द टाइम्स हैव कम दैट वी मस्ट आल्सो एड्रेस द न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट एज वेल इन आवर क्रॉप्स। न्यूट्रिशनल, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, बीटा कैरोटीन्स, और आयरन और जिंक. We're talking of fortified atta, for example, with iron, etc. So rather than doing this fortification, we can directly do it through the process of genetic engineering, as I will describe to you a little bit later. Then also हमें clean और green environment भी चाहिए। हम लोगों को ये नहीं है कोई पूरा हम पेस्टिसाइड इतने ज्यादा यूज करें और फर्टिलाइजर्स इतने ज्यादा यूज करें, वो बहुत ज्यादा जरूरत करने की भी हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी जो वातावरण है, हमारा जो एयर है, पॉल्यूशन ना हो। जैसे आप किसानों के खेतों में जब जाएंगे, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड अगर यूज होता है पूरे गांव में, वो काइंड ऑफ एयर जो पोल्यूट हो जाती है, और फर्टिलाइजर्स जो है वो लीच आउट हो जाते हैं, केमिकल्स टू द अंडरग्राउंड वाटर, वो भी पोल्यूट कर देते हैं। तो ये सब भी हमें साथ साथ में इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, और फार्मर्स वेलफेयर एक बहुत जरूरी है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मैसेज के द्वारा कि हमें फूड प्रोडक्शन तो बढ़ानी है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है
कि हमें वो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ में फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड की कंजम्पशन भी कम करनी है। पहले था कि हम लोग फर्टिलाइजर ज्यादा दें, पानी ज्यादा दें तो प्रोडक्शन बढ़ती थी, लेकिन आज हमारा जो स्लोगन है वो डिफरेंट है। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मोर फ्रॉम लेस, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हमें उस तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए हमारे चैलेंजेस भी और भी बढ़ जाते हैं, पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज है। आजकल आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया है, 49 to 50 डिग्री सेल्सियस are also being witnessed in different parts of the country, including northern part in India, as we can see. As a result, shrinking per capita land and water कम होते जा रहा है और बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं। एक्सपेंडिंग बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे मैडम ने बताया, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं फ्लड की सिचुएशन होती है, कहीं सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। फिजिकल फैक्टर्स जो स्ट्रेस क्रिएट करती है प्लांट्स में, एग्रीकल्चर में, वो एबायोटिक हो जाती है। जो बायोटिक हैं, डिजीजेज हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं जो डैमेज करते हैं, वो भी नई नई तरह की किस्म आ रहे हैं। जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि कोविड-19 जैसा कोई एक वायरस ऐसा आएगा और दुनिया को हिला के रख देगा। तो इस तरह का हमें सोच डर लगता है कभी कभी प्लांट्स में, जो कि बहुत सी ऐसे नए वायरसेस आते रहते हैं, लेकिन उस तरह का ना हो, इसलिए हमें पहले से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये भी बहुत सी चैलेंजेस हैं। और एक सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, मतलब इन द सेंस अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम लैंड ज्यादा फॉरेस्ट को काट के लैंड को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इंडिया में खास करके पॉपुलेशन, आप लोगों को सबको मालूम है, आफ्टर चाइना वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। टुडे वी आर नियर 1.4 बिलियन and I think very soon by 2050 we will be crossing even 1.65 billion mark, or 1.7 billion. So these are the projections. So therefore you can imagine कि हमारे यहाँ to meet these societal needs और human needs, जो हमारे लिए बहुत सर्वाइवल के लिए जरूरत है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरत है, हमें इसका ध्यान रखना है और साथ साथ में इन चैलेंजेस को भी हमें एड्रेस करना है। तो इसके लिए फिर हमें साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन अब तक हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस हैं? अब तक हमारे पास जो अप्रोचेस अवेलेबल हैं वो है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड। ज्यादातर, अधिकतर भारतवर्ष में अभी हम लोग कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, क्योंकि जो इस प्रोसेस को बहुत तेज कर देती है। इसमें कोई भी नई किस्म को बनाने के लिए हमें 15 से 20 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उसको 5 से 10 साल में भी कर सकते हैं, 10 साल से कम में भी कर सकते हैं इस मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन आज जो हम बात करेंगे मेरे लेक्चर में, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स, और इन जनरल आई सेड बिफोर वी कैन कॉल देम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसका जीएम क्रॉप्स एक हिस्सा है। ऑर्गेनिजम्स में सभी आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सभी इसमें आ जाते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद भी एक नई इंप्रूवमेंट हो गई है ऑलरेडी पिछले करीब 7-8 सालों से देश भर में और वर्ल्ड में, कि वो है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें हम एसेंशियली जीएमओज बनाते हैं, जीएम क्रॉप्स बनाते हैं, कि एक जीन एक अलग सोर्स से, जैसे मैडम ने बताया, उसको हम जीन को आइडेंटिफाई करके पौधे में डाल देते हैं। वो जीन पहले पौधे में नहीं होता, लेकिन उसको बाहर से किसी भी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और इसमें डाल देते हैं, तो इसको हम लोग जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। वैसे टेक्निकली दिस वर्ड इज ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांस वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से जिसे हम बोलते हैं। उसका मतलब है यहाँ के हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के एक जीन लेकर हमने पौधों में डाल दिया, तो पौधा ट्रांसजेनिक पौधा बन गया। तो लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अंत में बताऊंगा, जीनोम एडिटिंग, कि जिसमें आपको बाहर से कोई जीन लाने की जरूरत नहीं होती है। जो जीन पौधे में ऑलरेडी है उसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं बहुत प्रिसाइजली और एक्यूरेट मैनर, कि जिसकी वजह से फिर वो नॉन जीएमओ भी एक जेनेटिकली जीनोम एडिटिंग क्रॉप, लेकिन इंप्रूवमेंट उसमें हो जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मुझे पक्का विश्वास है, और खास करके उनके पेरेंट्स को ये मालूम होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा आई। ग्रीन रिवोल्यूशन एक्चुअली 1960s में ये काम शुरू हुआ था, और मिड 60s में जाके 70s तक हम लोग इसमें कामयाब हो गए थे। लेकिन ये एक इंटरनेशनल एफर्ट था। इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था कि हमें वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी थी, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और
और इन विद इन आवर कंट्री लाइक विद इन इंडिया, पंजाब एंड अदर स्टेट्स, जो कि हम लोग हरियाणा जहाँ वीट ज्यादा ग्रो हो रहा है, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश, एंड सेंट्रल इंडिया एंड ऑल। सो हमें वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी तब तक जो अवेलेबल थी, सिर्फ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। उस टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कुछ, जैसे उस टेक्नोलॉजी में जैसे मेल और फीमेल, मैडम ने जैसे बताया, आपस में क्रॉस किए जाते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड में, और उनको एक ये नई प्रोडक्ट बनती है। बस इस नई प्रोडक्ट को भी दूसरी किसी वैरायटी से क्रॉस किया जा सकता है, फिर एक और नई प्रोडक्ट बनती है। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक आप जिस तरह की जो गेहूं फॉर एग्जांपल चाहते हैं, न्यू वीट्स फॉर एग्जांपल, वी वांटेड सेमी ड्वार्फ, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी जो कि गिर जाती थी बारिश के दिनों में, लॉजिंग हो जाती थी अगर बारिश होती थी, तो इसलिए वो सेमी ड्वार्फ, उसकी हाइट कम करनी थी। ओके, उसकी यील्ड भी बढ़ानी थी। अगर वो 1 टन पर हेक्टेयर हमें मिलता था तो हमें 3 या 4 या 5 टन पर हेक्टेयर तक उसकी पैदावार बढ़ा सकते थे कि नहीं, वो कोशिश थी। और उसको बीमारी एक लगती थी रस्ट, उसको भी रेजिस्टेंट बनाना था, और फास्ट मेच्योरिंग, कम समय में अगर वो मेच्योर हो। और हमारे हिंदुस्तान में हम स्प्रिंग वीट ग्रो करते हैं, कनाडा यूएसए में जैसे विंटर वीट ग्रो करते हैं, तो हमें स्प्रिंग वीट पर ये फोकस था, खास करके फॉर कंट्री लाइक इंडिया। सो ये एक इंटरनेशनल एफर्ट डॉक्टर नॉर्मन बॉर्लोग ने शुरू किया मैक्सिको में, जो कि एक इंटरनेशनल वीट और मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उन्होंने, और ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा उनको बहुत सूझबूझ से काम करना उन्होंने किया, और कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड के द्वारा ही उन्होंने जो ये हम चाहते थे, सेमी ड्वार्फ, हाई यील्डिंग और रस्ट रेजिस्टेंट फास्ट मैच्योरिंग टाइप ऑफ वीट, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, उन्होंने डेवलप कर दी, जिसको न्यू वीट्स कहा गया, which gave rise to actually speaking wheat or green revolution in a country like India. That time, Honorable Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, in fact, came out with this, with a stamp was released in the name of Green Revolution as a result of that. And the seat of that Green Revolution in India is the institution, where I did my PhD, that is Indian Agricultural Research Institute. And then Dr. Swaminathan later joined hands with Dr. Borlaug, brought that material from Mexico to India, and they did all that wonders. And we were so happy that today, as a result of the revolution, and also not only in wheat, also in rice, we are self-sufficient, and we don't have to now beg and borrow as we were doing before. The green revolution, some of the wheats we were borrowing from countries like America under Public Law 480. But right now we are self-sufficient. We are just a mark of about 300 million ton total food production, mostly wheat and rice, and of course coarse cereals, and including pulses as well in that. बट देन, जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस हमारे बहुत हैं। सो हमें बाकी जो अभी नई टेक्नोलॉजी, जिससे मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की और जीनोमेरिटिक की बात की, उनको भी हमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग के साथ और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के साथ मिलाकर इन सब टेक्नोलॉजीज को यूज करना बहुत जरूरी हो गया है। और मैं स्टूडेंट्स के लिए पहले आगे जाऊं, आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली मैंने जैसे बताया आपको, टाइम इज बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसे हमें सेव करना है। बाकी भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी सेव करना है। बट कन्वेंशनल ब्रीडिंग जबकि हम करेंगे और करते आ रहे हैं, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम है, एक इसमें सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। कभी कभी कोई एक जीन दूसरी वीट की वैरायटी में है, वाइल्ड स्पीशीज में है, लेकिन उसको हम क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे मेल और फीमेल का एग्जाम्पल मैडम ने भी दिया, हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो अगर क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो उस अच्छी एक वाइल्ड वीट में अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, एक नया जीन है, जो हम ट्रांसफर करना चाहते हैं मैंने हाई यील्डिंग वैरायटी में, तो वो हम नहीं कर पाए। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में, जैसे मैंने बताया, इट्स अ काइंड ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग ओनली, बट इट हेस्टन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करते हैं। जैसे अगर ये वाइल्ड स्पीशीज में मैंने कहा सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी है, हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं मेल और फीमेल को, तो हम यहाँ वाइल्ड स्पीशीज से उस जीन को अगर निकाल सकते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा वो पॉसिबल है कि हम उस जीन को निकाल सकते हैं। फिर उसको हम अपनी जो क्रॉप है वीट में, जो हाई यील्डिंग है, उसमें उसको ऐड कर सकते हैं, एंड एज ए रिजल्ट वो जो बैरियर है वो हट जाता है। देयर इज नो बैरियर एनी मोर ऑफ सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दैट यू कैन isolate a specific gene from any organism, could be from bacteria, okay, could be from animal source, could be from fish, from any organism. You can take a specific gene and you can introduce into a plant and can see whether that property has been added into the plant or not. For example, genes from insects have been from bacteria has been taken for making plant resistance to insect pests. I give you one example of that as I go further. तो ये इसमें सबसे बड़ा फायदा है, जो कि यहाँ ये फायदा नहीं है।
और जीनोम एडिटिंग में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी एक स्टेप आगे है कि इसमें हम लोग बहुत प्रिसाइजली एक पर्टिकुलर जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जीन को ऑल्टर कर सकते हैं जैसा हम चाहें वैसा, जो कि इसमें नया जीन ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे सोर्स से। इसमें दूसरे सोर्स से कोई जीन लाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी कोई जीन ऐसा है कि जिसका फंक्शन आप स्टॉप करना चाहते हैं, या कोई उसका जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, precisely by mutating certain bases of the DNA of that gene, one can do it. So therefore, friends, students, it's important that today in India as well, in this 21st century, we must try to understand these latest tools and technologies of genetic engineering and gene editing. And also we must try to learn more and more about genes and how these new science-based technologies can help us in increasing our production or making in general life better, not only for us, particularly for the farmers, so that they can produce more with less input. और ये मैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को दोबारा से दोहराते हुए आप लोगों को, स्टूडेंट्स को खास करके बताना चाहता हूं कि जैसे ये फॉरेन जीन हमने कहीं से निकाल लिया, उसको हम पहले प्लांट सेल में डाल देते हैं और उस प्लांट सेल को टिश्यू कल्चर के द्वारा आप सबको मालूम होगा कि हम लोग उनको मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो एक सेल से बहुत सेल्स बन जाते हैं और उस सेल्स को से वो टिश्यू और ऑर्गन्स बन जाते हैं। जैसे आपने देखा ये लीफ बन गया, रीजनरेट हो गया। इसको जब हम पॉट में ट्रांसफर करते हैं तो फिर ये जिस सेल में ये जीन गया था उस सेल से अगर ये प्रोसेस ऐसा सक्सेसफुली होता है तो ये जो प्लांट होता है इसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट या जीएम क्रॉप प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो जीन पहले नहीं था, जैसे ये क्रोमोसोम है जहां इसमें दिखाया है लाल रंग का ये जीन इसमें इंटीग्रेट हो गया है जो कि इसमें पहले नहीं था, तो इसमें वो नया जीन आ गया, इसलिए ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। और इसी तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मेरी लैब में ऐसा जो किया है, टोमेटो का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि एक फॉरेन जीन हम लोग ये जो लीफ होते हैं उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स काट के पेटी प्लेट में डालते हैं, उसमें एग्रोबैक्टीरियम जिसमें ये जीन होता है उसको उससे इन्फेक्ट करते हैं, फिर बाद में देखते हैं उन्हीं सेल से ये रीजनरेट हो रहा है। ये रियल लाइफ में जैसे होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको टोमेटो के द्वारा। और देन यू कैन सी दिस आर रीजनरेटिंग and then they are further growing and then you can see the roots are developed and then they transfer to the pots and the full plant is grown. And in this whole plant now, there is a new gene we call it as a foreign gene, and therefore these plants become transgenic plants. Okay, and then we have to then test later whether this foreign gene which was added here has given that advantage to the plant or not. For example, we wanted to make plant tolerant to drought, or we wanted to make plant more nutritionally enriched, or we wanted to make plant more resistant to insect pests. So अलग अलग तरह के जीन्स हम अलग अलग सोर्सेज से लेकर इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में डाल सकते हैं और उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। मैं इसे कहता हूँ कि जैसे ये बनाना है which is destroyed totally by a disease called banana bacterial wilt, जिससे पत्ते सूख जाते हैं। जैसे आपने देखा है यहाँ बनाना बैक्टीरियल विल्ट, ये एक बिल्कुल पत्ते यहाँ देख रहे हैं आप बिल्कुल सूख गए, ये प्लांट मर जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, डॉक्टर लीना त्रिपाठी हिंदुस्तानी साइंटिस्ट हैं जो बाहर देश में काम कर रही हैं, उन्होंने पेपर, ये जो शिमला मिर्च कहिए या उस तरह का जो ये पौधा है, उसमें से एक जीन लिया उन्होंने और उस जीन को इस जब पौधे में डाल दिया बनाना में, तो आप देख रहे हैं कि ये बनाना अब उस पर्टिकुलर डिजीज से नहीं मरता है। Okay, in a way, these banana plants have become now resistant to particularly this disease we call it as bacterial wilt. It has become resistant. अगर हम ये जीन अगर बैक्टीरिया में भी होता तब भी हम कर सकते थे, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी हमने कर लिया। इनको हम क्रॉस नहीं कर सकते मेल फीमेल, जैसे मैंने एग्जांपल आपको वीट में ग्रीन न्यूट्रिशन के दिया। लेकिन अगर हमारे पास इसमें जीन मालूम है हमें कौन सा है, if we can isolate that gene and through the process of genetic engineering, if we can transfer this gene to a plant, which is possible, we develop a transgenic banana or a genetically modified banana which becomes resistant. So therefore, this is one of the best technologies one can think of. Now talk to those farmers who are otherwise having such a great problem. Now they are happy about growing these plants which are resistant to this particular disease. मैं फिर दोबारा से इस चीज को इस एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग में और जीएम क्रॉप्स की जो टेक्नोलॉजीज में क्या फर्क है। अब ये मेल और फीमेल है जिनको हम आपस में क्रॉस करते हैं। समझो वीट है, एक वीट का प्लांट है, ये दूसरा वीट का प्लांट, अलग अलग वेराइटीज है।
इसमें से एक जीन हमें इसमें डालना है। अगर ये हाई यील्डिंग है बट ससेप्टेबल टू अ डिजीज, तो ये एक ऐसा इसमें जीन है, वाइल्ड प्लांट है समझो ये, या इसको क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें ये जीन है विच विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। वो जीन ये है जो ऑरेंज सर्कल इसमें दिया हुआ है, मोती की तरह इस माला में। ओके, सो हम जब दोनों को क्रॉस करते हैं तो फाइनली हम वो प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें 10 से 15 साल लग जाते हैं कि वो जीन इसमें हमारी इस वैरायटी में आ गया, एंड दिस इज द न्यू प्लांट वैरायटी नाउ। ओके, बट देन आप देख रहे हैं इसके साथ साथ में ही ये कुछ और येलो जो जीन्स हैं वो भी इसके साथ इसमें आ गए हैं, जो हमें नहीं चाहिए थे। एक्चुअली ये इनके गुण इतने अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी क्योंकि ये से जुड़े हुए हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते, ये जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। लेकिन अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा यही नई वैरायटी बनानी है, तो हम इस जीन को क्रॉस करने के बजाय इन दो पौधों को हम लोग जीन को ही आइसोलेट कर लेते हैं, डिजायर्ड जीन, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। इस जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इस नई वैरायटी, इस कमर्शियल वैरायटी में डाल देते हैं, और सिर्फ यहाँ एक ये जीन ही आया, बाकी और ये येलो जीन्स हमें लिए ही नहीं, इसलिए वो इसमें आने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। And therefore, this improved commercial plant variety, with only a single gene transferred, will be having now that advantage of resistance to a particular disease, at the same time to be high yielding, because this variety was otherwise high yielding. So we have now got rid of those unwanted genes, through the process of genetic engineering. And ये technology actually पहले available नहीं थी, ये available first time हुई 1983 में। 1983 में कुछ 3-4 साइंटिस्ट, इन्होंने अलग से अपने अपनी लैब में ये लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी कि कोई भी जीन एक बैक्टीरिया से लेके प्लांट्स में हम डाल सकते हैं क्या। पहले तो बैक्टीरिया से एक जीन को आइडेंटिफाई किया, उसको फिर प्लांट्स में डालने के लिए तरीका ढूंढ रहे थे, और प्लांट में डालने के बाद देखा कि वो जीन जो अपना एक काम करना चाहिए, उस जीन को प्रोटीन बनाना चाहिए, वो बना सकता है कि नहीं। उन्होंने सब स्टडी किया, और 3 इंडिपेंडेंट लैब से 3 साइंटिस्ट ने, एक लेडी मैरीडल चिल्टन, जो इस पिक्चर में नहीं है, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से, मार्क वॉन मेंटेगू जो इस पिक्चर में नहीं है, उन्होंने एक बेल्जियम से, और फ्रेले फ्रॉम मोन्सेंटो, ये फ्रेले हैं मोन्सेंटो के, ये इन लोगों ने 3 अलग अलग ही पेपर्स पब्लिश किए, 3 ग्रुप ने, कि भाई ये टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है जिससे हम कोई भी जीन बैक्टीरिया से या किसी भी सोर्स से प्लांट्स में डाल सकते हैं, प्लांट में वो जीन काम कर सकता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, एंड इन लोगों को 1983 में उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, और 2013 में 30 साल के बाद all 3 scientists were rewarded heavily with the World Food Prize, which is like a Nobel Prize in case of plants में Nobel Prize नहीं होता है, chemistry, physics, medicine, literature, peace, इन सब में होता है, but you can see here इसमें plants में they call it as the World Food Prize, and Dr. Mark von Mentegu जो ये हैं from Belgium, Meridel Chilton from Washington State University USA, and this is Robert Fraley from Monsanto. All 3 got the this particular prize, and this is the 3 independent workers in their lab when they were doing it. So the technology was so powerful that they were heavily rewarded with this. कुछ और मैं आपको real example देता हूँ। बनाना का example मैंने आपको दिया। USA में जो papaya is a very important crop. Of course, it's an important food crop anywhere in the world, including in India, as you all know it. बट ये एक पर्टिकुलर बीमारी, वी कॉल इट एज वायरल डिजीज, पपाया रिंग स्पॉट वायरस का नाम है, जैसे कोविड-19 ह्यूमंस में आया, पपाया में ये रिंग स्पॉट वायरस, PRSV बोलते हैं इसको, इसको बिल्कुल तबाह कर देता है इस पर्टिकुलर पपाया के ट्रीज को, आप देख रहे हैं। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ली, जैसे हम ये वैक्सीनेशन कोविड-19 के डेवलप कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट द्वारा उन्होंने ये ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, वो जीन दिया उस वायरस से, और उन्होंने उसको 1986 में वो काम शुरू किया, और 1992 तक 2 वैरायटी उन्होंने ट्रांसजेनिक इस चीज की, पपाया की बना ली, which were resistant to this particular virus, and it was happily growing. You can see here, this is a very big crop without any damage caused by that particular virus anymore, and this is now being cultivated, commercialized in USA, and happily eaten by all. This is another example of golden rice. Golden rice की जरूरत पड़ती है क्योंकि विटामिन A डेफिशिएंसी बहुत से चिल्ड्रन विमेन में रहती है, खास करके डेवलपिंग वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग इन इंडिया एंड मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सो वाइल्ड राइस, वाइल्ड टाइप राइस, नॉट वाइल्ड राइस, कल्टिवेटेड ऑफ कोर्स, बट हम लोग वाइल्ड टाइप कहते हैं कंपेयर टू ट्रांसजेनिक. तो इस पर्टिकुलर कल्टिवेटेड
rice में आप देखते हैं, you all know it, it is all white in color without any sign of beta carotene. Beta carotene is a yellow colored pigment. So if you increase beta carotene quantity in this white rice, it becomes yellow. You can see and you can measure how much beta carotene has been added through the process of genetic engineering by transferring genes from daffodils. आपको पता है daffodils के पत्ते, petals, colorful होते हैं. Maize के भी जो दाना है वो आप देखते हैं, उसमें भी ये होते हैं जीन्स और बैक्टीरिया से. 3 अलग-अलग सोर्सेज से जीन्स लेकर उन्होंने ये ट्रांसजेनिक राइस बनाया, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा 8 माइक्रोग्राम पर ग्राम, dry weight of the grains. And then they further increased 3 times more to take it to the level of 25 microgram per gram. You can see here the difference in color. It's further enriched, with this. So this is another beautiful example that poor children who cannot afford eating kind of all, different colors of vegetables and fruits like papaya, mango, tomato, carrots, and they have to, eat 3 times a day or whatever the times of the day availability, depending on that, they will be eating only rice. So if at least rice can be enriched with vitamin A, so their problems, especially with vitamin A deficiency, could be taken care of. And the potential impact of, therefore, this is expected to be, vitamin A deficiency, otherwise is a leading cause of child blindness. Any source of vitamin A will reduce child mortality by 23 to 34%. These are the studies which have shown so. So therefore, if beta carotene is produced enough quantity in golden rice, which could be then act as an immediate source for vitamin A. Beta carotene is something which we eat, but our system then can convert that beta carotene to vitamin A. And these are the 2 dishes you can see, very clearly advantage with regard to color, and this is, also, and this has been approved in countries like for food and even feed in Australia, Canada, New Zealand, US in 2018, and even Philippines also in December 2019. Or Philippines mein hi haal hi mein, this news came in on May 8th, this month only, about 10 days ago, 2022, that Philippines become the first country to approve its commercial planting. In July 2021, that orders came, and this is one of the officials, Dr. William Durr, is distributing the seeds, to the people or to the growers for growing them and increasing, their production and quantity for commercialization to the masses. And Philippines will be the first country. Similarly, for countries like Uganda, their staple crop is like we have wheat and rice. For them, it is banana, green banana, which is cooked banana. Okay. And here they want to also enrich this banana with vitamin A or beta carotene. Dr. James Dale from Australia has done it. And this is likely to be released in Uganda, in a year or 2 to have a significant impact in alleviating the vitamin A deficiency, diseases in a sustainable way, especially in rural Uganda. So this is something, again, very important kind of an activity. जिसमें के genes from maize और bacteria से लेके उन्होंने ये बनाना जो normal है, इसमें कोई beta carotene नहीं है. आप इसमें देखते हैं कि अच्छी quantity में beta carotene available है. अगर इसमें 5 माइक्रोग्राम था तो ये 4 times इसमें ज्यादा हो गया है beta carotene की मात्रा. तो overall अगर आप देखें world में where all the GM crops are currently grown, they're grown in almost entire world, about 29 to 30 countries, of course. North America में USA है, और बाकी Latin America है, South America है, जिसमें ज्यादातर ब्राजील और अर्जेंटीना है, यूरोप में है बहुत से countries, अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका है, एशिया में चाइना है, और ये इंडिया है, और फिलीपींस है, जापान है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, बहुत से countries हैं. For example, पोटैटो यूएसए में बहुत फेमस है, स्क्वैश पंपकिन भी यूएसए में, अल्फा भी यूएसए में, और बैंगन, we call it as what, eggplant or brinjal, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश, सुगर बीट यूएसए में और कनाडा में, पपाया आई मेंशन बिफोर यूएसए और चाइना में, ऑयल सीड रेप जैसे हमारा मस्टर्ड का जो तेल होता है उस तरह का क्रॉप 4 कंट्रीज में है, मेज, corn also called in US like in 17 countries, soybean in 11 countries, cotton in 15 countries. So this is what currently about 190 million hectares, more than 190 million hectares, is grown, in different parts of the world. And mostly, for example, in USA, Brazil, Argentina, Canada, and India, almost more than 90% there's an adoption of any GM crop which they are growing. For example, USA it is 95% adoption, in Brazil 94%, Argentina 100%, Canada 90%,
in India, it is 94%. And in India, it is mostly, the only crop is BT cotton, which is protected, from the damage by the insects using a gene, we call it as BT. This is the name of a bacteria from where a gene has been taken and introduced into this cotton, which is otherwise totally devastated as a result of the damage by the insect pest. But if you put this gene from bacteria, this becomes BT cotton, and here this is protected. And you can see here, this is growing very well. And there is an adoption rate, as I said before, is about 95%. This is shown by this curve here. And this is the area, million hectares under which the BT cotton has been grown. You see, it was first introduced in 2002, hardly any area, but today, it has grown up to, 11.5 million hectares, 11.5 million hectares. And only this much area is shown here in light blue, which is under non-BT, but mostly it is all BT. And it has made a big impact for India at an international level. As you can see here, share of India in world cotton market has increased tremendously, when you compare from 2002 when BT cotton was introduced to 2016 or even now 2022. How much, kind of world share we have in the international market. India has now 25%, which was only about 12% in 2002. In 2016, it became to 25%. It almost doubled. Okay, whereas you can see in countries like China, it came down a little bit. In the USA, it came down from 19 to 14. But India became a big shareholder of 25% in the world market, particularly in cotton. And this is the difference. Otherwise, this is non-BT cotton, which is damaged by insect pests. And you see the quality of the cotton produced. And ginners and textile mills prefer therefore this BT cotton quality. So that kind of an impact it had. And there was a less amount of pesticide used by the farmers. Higher, yield and more profit, therefore they got it as a result of that. My slide's not moving. It sometimes happens. I hope it will. Give me a minute, please. It's not going back either. So you may stop sharing first and then again share your screen. No, that's okay. I think it should come. Yeah, it is here. So the next product in India we're talking about is, after BT cotton, is BT Brinjal, which has been developed, which has been approved, in fact, officially by the apex body. But there was a moratorium put on this right from last about 10 years. But Bangladesh took the advantage of the same event, which was developed by Indian scientists, particularly the private sector, and they developed in their own cultivars these 4 different types of cultivars. They introduced that gene, and as a result of that, they have got a reduced pesticide cost now, and as a result of that, there's a significant reduction in the intensity of pesticide application by 28%. Application of pesticide in BT Brinjal has come down by 28%, and the profit to the farmers is about 49% over those who are not growing BT cotton. So the application of pesticide has come down by 28%, which is quite significant, and the profit to the BT farmers has gone up to 49% compared to those who are not growing BT Brinjal. So these are the advantages. And similarly, another hybrid we have, which has been approved or likely to be approved, we say so. Otherwise, it has been cleared by the Generic Engineering and Appraisal Committee, and that is GM mustard hybrid, where there is a possibility of increased yield from somewhere about 27 to 37%, which is also quite significantly high, because we import a lot of seed. Of course, it is not only mustard, but other palm oil and other oil seeds we import. But then if we are trying to be self-sufficient, we need to use this technology. And we already have a GM mustard developed by Professor Deepak Pantal of Delhi University. So in India, we have about these 15 to 16 crops actually where the work on GM crops is going on. There are so many different crops. And these are the crops which are listed here, all 16 of them, for various traits. For example, in these crops, the trait introduced is insect resistance. That's using a gene from a bacteria. This is virus resistance using a gene from a virus. This is herbicide tolerance using a gene again from a bacteria. Again from bacteria, drought tolerance. The gene could be used from any of the wild sources.
of the same plant or other plant crop, yield enhancement, delayed ripening, male sterility, female inbred lines, particularly for developing hybrids in case of mustard and rice. So this work is all in progress. And in fact, the emphasis was given in the introductory remarks also that the parents or children would like to know about the biosafety. और इस स्लाइड को अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स और जो भी ऑडियंस है अगर ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिफोर दीज क्रॉप्स आर रिलीज्ड और कमर्शियली अलाउड टू बी रिलीज, क्या क्या उसमें हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट और एनवायरमेंटल सेफ्टी असेसमेंट और टेस्ट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, हेल्थ सेफ्टी के लिए कंपोजिशन एनालिसिस की जाती है कि कोई न्यूट्रिएंट कंपोजिशन में, लीफ या सीड में कुछ ऑल्टर तो नहीं हुआ, ऑल्ट्रेशन में कोई टॉक्सिन या एंटी न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन में कोई फर्क तो नहीं हुआ, टॉक्सिसिटी पोटेंशियल उसका हम स्टडी करते हैं, जैसे कोई एक्सप्रेशन लेवल उस इंट्रोड्यूस प्रोटीन का कितना था, बहुत ज्यादा तो नहीं था कि जिससे कोई एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी हो सके. प्यूरिफाइड प्रोटीन की भी एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी टेस्ट की जाती है. सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी विद एडिबल पार्ट्स भी की जाती है. एलर्जेनिसिटी पोटेंशियल की भी टेस्ट किए जाते हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस किया जाता है उस जीन का ही सबसे पहले, प्रोटीन का, कि कहीं ये बाकी जो नॉन एलर्जेंस है उनसे कोई इसका सीक्वेंस मैच तो नहीं करता. और उसकी फिर पेप्सिन डाइजेस्टिबिलिटी टेस्ट की जाती है. अगर वो पेप्सिन डाइजेस्टिबिलिटी उसकी ठीक ठाक है तो वो एलर्जन नहीं हो सकता है. और थर्मल स्टेबिलिटी भी अगर उसकी इतना स्टेबल नहीं है तो वो भी एलर्जन नहीं हो सकता है. ये कुछ ऑलरेडी लिटरेचर में साइंटिस्ट द्वारा स्टडी किए हुए हैं ये सारे टेस्ट, एंड दीज आर ऑल in conformity with international standards of biosafety regulations and guidelines. These all tests are done. Similarly, the tests for the safety assessment to environment are also all done. For example, weediness potential, कि भाई जिस particular GM में वो चला गया crop तो उसकी कहीं weediness potential कहीं weed तो नहीं बन जाएगा, तो उसके germination study किए जाते हैं, उसकी seedling vigor study की जाती है, और उसको सबको compare किया जाता है जो non transgenic होता है, जो non GMO होता है, उसके साथ compare किया जाता है. क्योंकि सिर्फ हमें वही इसमें गुण चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए जो इस पर्टिकुलर एक नए जीन के द्वारा उसमें हमने डाली है. बाकी सारे टेस्ट इसमें हम देखते हैं कि वो सेम रहते हैं, कोई उसमें बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट फर्क नहीं होता. तो क्रॉसिबिलिटी और जीन फ्लो भी स्टडी की जाती है. इफेक्ट ऑन सॉइल माइक्रोफ्लोरा भी स्टडी किया जाता है. इफेक्ट ऑन पेस्ट डिजीज और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, जैसे कि बीटी कॉटन जब आया तो ऐसे लगने लगा कि हनी बी जो होती है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी क्या. लेकिन मैं खुद एज ए मेंबर ऑफ सम ऑफ द कमिटीज पंजाब गुजरात में जाता रहा हूँ, जहां मैंने खुद जाके महसूस किया है कि हनी बी की पॉपुलेशन बढ़ गई है. बल्कि PAU लुधियाना ने और HAU हिसार में वैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जिससे ओवर द टाइम पता चला कि हनी बी की पॉपुलेशन बीटी कॉटन आने के बाद बढ़ गई है. वो इसलिए क्योंकि अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो कोई भी उसमें उसके कांटेक्ट में जो आएगा वो मर जाएगा, कोई भी इंसेक्ट जो वो फ्रेंडली इंसेक्ट होगा. लेकिन अगर बीटी जो है वो पर्टिकुलर जीन जो बैक्टीरिया से लिया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंसेक्ट्स को ही मारता है, हर एक को नहीं मारता है. तो इसलिए उसके ऊपर हनी बी के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा. और बहुत सी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया में बाहर सभी देशों में बहुत सी स्टडीज हुई with regard to the GM food safety and environmental safety, and the data in more than last 20 years or about 25 years now have considered it all safe. GM crops are safe. 123 Nobel laureates supported this biotechnology to the process of genetic engineering developing GM crops. US National Science Academy, जिसके scientists, very well known scientists, Nobel laureates included, उनकी रिपोर्ट ने क्या पाया, उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की पूरे पब्लिश्ड एविडेंस के ऊपर. उसमें देखा कि डिक्रीज यील्ड लॉसेस कम हुए हैं और इंसेक्टिसाइड यूज भी कम हुआ है बीटी क्रॉप्स में. कितनी बड़ी फाइंडिंग है ये. और हायर इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी भी हो गई है ड्यू टू प्लांटिंग ऑफ बीटी क्रॉप. जैसे मैंने बताया इंसेक्ट पॉपुलेशन, हनी बी और ये सब बढ़ गई है एज ए रिजल्ट ऑफ बीटी क्रॉप्स. Animals were not harmed by foods derived from genetically engineered crops. We call them also genetically engineered crops or GM crops or transgenic crops or GMOs. They are the same. Animals were not harmed. Then, and also they further to the governments that we should increase our investment. We should put more money, to develop, to use this technology to address the issues of food security. जहाँ भी food की कमी है
और हमें अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमें यूज़ करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, जैसे मैडम ने बताया, आई एम एसोसिएटेड विद दिस एकेडमी नाउ। हमने भी पहले अपनी एक राउंड टेबल डिस्कशंस किए हैं, सब एक्सपर्ट्स को बुलाया है, और उसमें भी हमने पाया है कि these genetically modified crops are safe to the human beings, to the environment at large. Now, briefly, another 5 minutes I will spend, not more. I think I'm, not five minutes only, Dr. Loveleen, no more. Then we'll have question answers. So this is genome editing. Genome editing में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट पहले मैं खुशी से ये बताना चाहता हूँ सभी साइंटिस्ट को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कि these two young women scientists were awarded Nobel Prize for the discovery of this technology. इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि आप जो विद इन द ऑर्गेनिज्म, विद इन द प्लांट को कोई भी जीन को थोड़े से बेसिस को भी म्यूटेट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। जैसे मशरूम अगर आप बाहर छोड़ देते हैं हवा में तो वो ब्राउन हो जाता था, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है और हमें भी खाने में या देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस टेक्नोलॉजी के द्वारा 2016 में ही, और ये टेक्नोलॉजी आई 2013 में, 12-13 में, और 2016 में ही ये मशरूम ऐसे बन गए, और वो नोबेल प्राइज मिला उस टेक्नोलॉजी को 2020 में मिला, 2 साल पहले। और इसी तरह से ये टोमेटो है जो कि डिजीज से बिल्कुल मर जाता है, और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर पर्टिकुलर एक जीन को ही आप अगर म्यूटेट कर देते हैं, उसको नॉन फंक्शनल कर देते हैं, तो वो प्लांट देखिए आप इसको रेजिस्टेंट हो जाता है, वो डिजीज फ्री हो जाता है। और इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज टू develop some oral vaccines for COVID-19. ऐसा भी हो रहा है, rather than getting injection, which is also possible that you can produce those vaccines or antibodies within the plant parts. उसमें से आप उस प्रोटीन को निकाल सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, इंजेक्शन के द्वारा वो वैक्सीनेशन दी जा सकती है। इवन अदरवाइज ऑल्सो, जैसे आप उसको हमारे कैप्सूल्स में लीव्स को डाला जा सकता है, एंड इवन ओरल वैक्सीन्स, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, एंड इन फैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड इन फैक्ट आई डोंट हैव दैट एनफ इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट विद मी राइट नाउ, बट इट सीम्स दिस इज आल्सो हैपनिंग, plant based vaccinations or these therapeutic monoclonal antibodies can be produced and can be used against COVID-19. So finally, to sum up with regard to coming back to GM crops quickly, the GM crops are here to drive benefit for the farmers. Okay, this is very important. And I said before, India has developed, many of these 15-16 crops are in the pipeline for different traits, and globally 20 years of testing for health and environmental safety has verified that GM crops are all safe. So therefore, आजकल IPL मैच बहुत चल रहे हैं, मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, IPL मैच देखता हूँ, तो मैंने अपनी एक IPL की ड्रीम 11 बनाई है, GM क्रॉप्स को लेकर ड्रीम 11। उसमें मैंने ये सब रखे हैं कि हमारे इंडिया में ये सब 11 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स गवर्नमेंट के द्वारा अगर अप्रूव होती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं। For example, I'm talking about BT Brinjal, which is already developed, genetically modified mustard hybrid, or herbicide tolerant BT cotton, virus resistant cotton, nitrogen use efficient cotton, with less nitrogen it can produce more of yield, drought and salt tolerant cotton, again herbicide tolerant BT maize, BT chickpea, BT pigeon pea, chickpea और pigeon pea भी की हमें प्रोडक्शन इंडिया में बहुत बढ़ानी है, इससे बहुत डैमेज होता है। We are not self-sufficient, though we have made a very good progress in the last 5 to 7 years increasing production of our pulse crops, but still long way to go. Again, droughts or salt tolerant or herbicide tolerant rice, salt tolerant wheat, late blight resistant potato, heat tolerant wheat for a country, for a situation like what we have in Punjab and Haryana, Western UP. It's so important, or Central India, it's so very important. So I hope that Government of India would certainly be more interested, and of course we are very thankful to them for allowing the use of genome editing technology, particularly 2 different categories as non-GMOs. They've exempted from biosafety regulation, which is a very big news, for the world, and that shows that India has a potential of even becoming a hub of some of those genetically modified or genetically genome edited, crops in the world, and so that we can supply to the rest of the world. In fact, as we were trying to do, recently with wheat and other crops, for the welfare of the globe as a whole, So therefore, there is a lot of potential in this technology. Students को, teachers को, parents को इसके बारे में general awareness होना बहुत जरूरी है.
आजकल न्यूज़पेपर्स में आप देखें, कहीं भी रेडियो में, या रेडियो तो नहीं, टीवी चैनल्स में, सब जगह आप देखेंगे इसके बारे में बातें होती हैं। और हमें जानबूझकर अपना एक डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझकर कि भाई, और हम सब लोग, जैसे मैंने आपको बताया, 20-25 साल से इंडिया में ही नहीं, सब जगह ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अबाउट 70 to 75 कंट्रीज में खाया जा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, to animal health, to human health or to environment. This must be we all very clear about it. अगर कुछ कंट्रोवर्सी है, वो सिर्फ नॉलेज बेस हो सकती है, अपना एक परसेप्शन अलग हो सकता है। मैं अगर नॉन वेजिटेरियन हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं नॉन जीएमओ की तरफ रहूंगा तो कोई बात नहीं। नॉलेज जो है साइंस बेस्ड है, वो परसेप्शन क्लियर है, दे आर ऑल वेरी सेफ। सो विद दिस आई वांट टू थैंक द यंग स्टूडेंट्स विद दिस वंडरफुल फ्लावर्स। ये फ्लावर्स भी बाय द वे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। ये कार्नेशन जो आप देख रहे हैं अलग अलग रंग के, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। And these are all for the audience, for the students, for their parents, and this is all for Dr. Nilima Jerat and Dr. Lavleen Corbarat. And thank you very much to all of you for this opportunity. Thank you. Any questions, any answers, I'd be happy to provide for any long as you want. Thank you so much, sir, for this insightful presentation and for these beautiful flowers, of course. So we'll be taking questions. Participants, please raise your hand. Can I stop sharing in the meanwhile? Sure, sir, please. Can I stop sharing? Yes, please, sir. So please raise your hands. We will unmute you one by one. Good afternoon, sir. Some genomes effects on the genotypic and phenotypic ratios. नहीं, दोबारा बताएं क्वेश्चन। So genomes effect on the genotypic and phenotypic ratio in the field of animals. नहीं, ऐसा कुछ इफेक्ट मैंने बताया ना विद रिगार्ड टू जो बायोसेफ्टी असेसमेंट जो होती हैं। क्वेश्चन मुझे बहुत क्लियर नहीं है। क्वेश्चन आपका कुछ स्पेसिफिक है तो जो आप पूछ रहे हैं जीनोम का। जो जीनोम टेक्निक्स है, इससे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो में कुछ फर्क करता है। नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं मालूम एक्चुअली स्पीकिंग, सॉरी, कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो किसकी आप बात कर रहे हैं। हम लोग जो करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, एक सिंगल जीन लेते हैं विच इज गवर्निंग ए पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। उस जीन को हम क्रॉप्स में डालते हैं, सिंगल जीन को, और उस जीन से अगर देखते हैं कि वो जीन था टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो फिनोटाइप हम देखते हैं उस प्लांट का, हाउ मच चेंज इट हैज ब्रॉट इन विद इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सिंगल जीन। एंड उससे हमें लगता है, जब आप कंपेयर करते हैं कि जिसमें वो जीन नहीं है और जिसमें जीन हमने डाला है, हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जिसमें जीन डाला है, वो एकदम रेजिस्टेंट है, उसको पत्ते ठीक है, ग्रीन है, उसकी बॉल्स फॉर एग्जांपल कॉटन है तो डैमेज नहीं हो रही है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फिनोटाइप ऑन व्हिच बेसिस वी सेलेक्ट एंड वी सी that kind of effect of this particular gene is very clearly visible on the phenotype. Sir, basically my question regarding the biodiversity here, so like the some animals, some is to rise in the genomes techniques. Then लोग कहते हैं कि इससे अगर आपने एक एनिमल्स का जीन्स दूसरे एनिमल्स में ट्रांसफर किया, नई जनरेशन बनाई, लाइक जैसे अब पंजाब में क्या होता है, गाय आती है दूध की, ब्लैती गाय बनाते हैं लोग, तो वो उसका जीन्स जो है वो देसी गाय में डाल के उसको ब्लैती गाय बनाया जाता है। तो उससे जो पहले वाली वैरायटी है आपकी, वो कम हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अलोप हो जाती है, जो नई वाली उस पर हावी हो जाती है। तो इससे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक इफेक्ट्स जो है वो उसकी रेशियो कम हो जाती है। नहीं, ऐसा है, वो बात मैं आपकी समझता हूँ, लेकिन मैं जो ये बताना चाह रहा हूँ, ऑफ कोर्स एनिमल्स में मैं नहीं काम करता हूँ, लेकिन इसमें ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने एग्जाम्पल बहुत सही दिया है। अगर देसी काउस की अगर आप बात करें तो वो फार्मर्स के द्वारा उसका यूज करना कम हो सकता है, लेकिन वो लुप्त नहीं हो जाती हैं। वो हमारे यहाँ जैसे कि एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा सेंटर है करनाल में, वहाँ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं उनकी अलग अलग वेज में, राइट। उनका डीएनए है, उनके स्पर्म्स हैं, उनके और भी जो जर्म लाइन्स हैं, वो सब उसमें कंजर्व करते हैं। तो ये मतलब नहीं कि अगर आपने विलायती काऊ का जीन अगर देसी में डाल दिया तो देसी काऊ लुप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल उदाहरण लोग
क्रॉप्स का भी देते हैं कि भी अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट बना दिया तो जो पहले वीट था हमारा देसी वीट वो खत्म हो जाएगा, वो फार्मर को करना कम कर देगा, वो बात समझ में आती है, लेकिन वो खत्म नहीं हो जाता है। वो हमारे यहाँ कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, जैसे मैडम ने बताया कि एनबीपीजीआर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें हम कंजर्व करके रखते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि हमें क्या उसकी जरूरत है कि नहीं है, उस पर डिस्कशन हो सकती है। क्या वो हमें विलायती जीन हमारी देसी काऊ में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, अब ये डिसाइड करना है, पॉलिसी डिसीजंस को इस चीज को सोचना है कि भी हमें सिर्फ किस जीन को ही हमें डालना है, हर एक को हमें टच नहीं करना है। ये डिस्कशन का पॉइंट अच्छा हो सकता है। यस, थैंक यू सर। The next question is from Meenakshi Vadhera. Meenakshi, please unmute yourself. अगर आप वीडियो भी ऑन करके क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे आई कांटेक्ट Better. Meenakshi, please switch on your video. if you want to, otherwise not. Okay. Sir, Leslie here. I've sent you the request, ma'am. You may please switch on your video now. No, if it is, video is also, if she said it's fine with me. Yeah. Yes, Meenakshi, I can see the fan. So my आई थिंक उनका बैंडविड्थ का इश्यू है, तो उनको वीडियो ऑफ ही करना पड़ेगा। Meenakshi, वीडियो ऑफ कर लीजिए। ऑफ कर दीजिए प्लीज वीडियो। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैडम, वीडियो ऑफ सर कर पहले दीजिए। उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है सर, फिर भी क्रॉप्स बनाते हैं। नहीं, क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ेगा। सॉरी मैडम, आपको सुना ठीक से मैडम लवली? No, sir. Meenakshi, please repeat your question. एक बार repeat करेंगे please? मैम, जो हम जीएम क्रॉप्स बनाते हैं, पहले उसकी टेस्टिंग होती है, फिर मार्केटिंग होती है, फिर भी कोई ऐसा जीएमओ है जिसने ह्यूमंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला हो? ऐसा कोई जीन नहीं, अभी तक नहीं हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। थैंक यू सर। अभी तक जितनी भी दुनिया में, जैसे मैंने बताया आपको, 12, 14, 15, 16 क्रॉप्स में जो अलग अलग कंट्रीज में उगाई जा रही हैं, उनका अभी तक ह्यूमंस पर या एनिमल्स पर या एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है। थैंक यू सो मच सर। Next question will be taking from Shubham Singh. Shubham, please unmute yourself. Good evening, sir. Sir, my question is कि जो हम genetically modified technologies use करते हैं, जो अभी कोई ऐसे experiments हो रहे हैं कि non legumes crops में biological nitrogen fixation के genes को incorporate करके जो मतलब nitrogen की उसमें efficiency हम ज्यादा बढ़ा सकें? बिल्कुल ऐसे काम हो रहे हैं, और खास करके राइस में हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी तक उसमें जो हमें सफलता मिलनी चाहिए, अभी तक वो सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जबकि ये अगर हो जाएगा तो इट विल बी ए वेरी बिग थिंग फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, नॉट ओनली फॉर कंट्री लाइक इंडिया। और राइस में जहाँ की फर्टिलाइजर की क्वांटिटी या एप्लीकेशन, इवन इन वीट फॉर दैट मैटर, और नॉन लिग्यूम्स जैसे आपने बताया, भले ही वो ऑयल सीड्स हो, उसमें अगर ऐसा अगर हो सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा। बट आई वुड लाइक टू से यस, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, mostly in rice, but no success yet to the level that we can say we have achieved the results which we wanted. Not yet. But work is in. मुझे सर एक पूछना था, जैसे फास्फोरस की हम बात करते हैं, जो रूट से फास्फोरस हम प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो आज के टाइम पे जैसे फास्फोरस तो एक ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, रॉक से हम निकालते हैं, और इंडिया में उसका इतना नेचुरल रिसोर्स है भी नहीं है। तो जो यूज एफिशिएंसी फास्फोरस कितनी कम है, वो सॉइल में जल्दी फिक्स हो जाता है। तो रूट्स पे भी ऐसा हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी जो रूट हेयर्स इंक्रीज हो जाए और फास्फोरस की यूज एफिशिएंसी ज्यादा हो उसमें, ताकि हमारा खर्चा कम आए जो इंपोर्ट हम इंडिया में करते हैं फास्फोरस। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कहा, ऐसा नाइट्रोजन में हो रहा है, और नाइट्रोजन में सफलता मिली है, फास्फोरस में भी कुछ हद तक सफलता मिली है। पी स्टॉल बोल के एक जीन है जो राइस में, लैंड रेसिस में पाया जाता है,
जो कि हमारे फार्मर्स में प्रचलित नहीं है, हाई यील्डिंग नहीं है. They have isolated gene from there and shown that there is a possibility of even uptake of phosphorus from low concentration. But इसके अलावा भी other route भी is also there कि mycorrhizal association अगर आप roots के साथ बढ़ाएं, of any plant for that matter, it has been shown, then that can mobilize phosphorus more easily to the roots of the annual plants, field crops. So mycorrhizal association is also, verbicular WAM के association भी बढ़ाने से इसमें फर्क पड़ सकता है. मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं. बट यू आर राइट, उसमें भी एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का हमारा एक हमेशा यही एक सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैन यू प्रिपेयर द सीड दैट व्हिच हैज गॉट इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू दीज biotic or abiotic stresses, or it has a power to take up these natural resources much more efficiently, not only take up efficiently, also utilize efficiently, so that we can try to produce more with less amount of nitrogen fertilizers or natural resources, be it nitrogen, phosphorus or potassium for that matter, or micronutrients, और micronutrients की भी quantity भी बल्कि उस level तक बढ़ाएं, particularly zinc and copper, and also so that इससे immunity भी हम लोगों की बढ़ेगी. COVID-19 के टाइम ये सब चीजें बहुत सामने आई, तो वो भी एक genetic modification के द्वारा, even through genome editing now people are pursuing it. There's a possibility that we would have these crops available too in near future. सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, इसमें जो अभी माल न्यूट्रिशन का स्टेटस है, तो जो ये जीएम क्रॉप्स हैं इन फ्यूचर रादर देन ऑप्शन एक नेसेसिटी हो सकती है इस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए. जैसे राइस में गोल्डन राइस की हमने बात की, ऐसे ही अगर पल्सेस में और जैसे लेंटिल्स में अगर हम ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बहुत फास्ट हम इसको टैकल कर पाएंगे. नहीं, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने. और इसमें आपको मैं बता दूं कि हर एक जगह पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है. जैसे गोल्डन राइस में ये नेसेसिटी थी क्योंकि आपको कोई नेचुरल वेरिएशन इतनी ज्यादा अवेलेबल उसमें नहीं थी कि आप कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा कर सकते थे. लेकिन हाल ही में अगर आपने सुना होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने number of varieties which are biofortified is dedicated to the nation, developed by various institutions in the country, mostly from Indian Council of Agricultural Research. So biofortification का तरीका जो कि conventional plant breeding द्वारा या through the process of genetic engineering, or through the process of now genome editing is possible. But what I'm saying is, so far, even again, conventional plant breeding methods have given a hope, and it is being used and utilized. मैंने जैसे कहा कि biofortified varieties conventional breeding method के द्वारा भी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं और हमारे देश में अभी हाल ही में उनको रिलीज भी किया गया है. क्योंकि पहले हमारे कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पेट भरना सबसे पहले जरूरी हो जाता है, क्वांटिटी. तो नेचुरली अभी हमें, क्योंकि malnourishment is a very big problem again in a country where we have large number of under 5 years of age children, underweight or pregnant women having anemia and all. So that is also important that we address the question of malnutrition. And इसीलिए अभी आजकल ध्यान भारतवर्ष का और बहुत से इंस्टीट्यूशंस का, जैसे ICR में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसमें आप मेज है, व्हीट है, पर्ल मिलेट है, सॉर्गम है, मिलेट्स हैं, और एज यू सेड पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, उन सब में ये विटामिन्स है या फिर न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है. So that's a very, very important issue, and I also personally want to talk more about it later. Yeah. But then, Thank you, sir. Of course, the other two methods available, I said before, genetic engineering and genetic modification or genome editing. Thank you, sir. आप unmute करें, Loveleen, please. Next question we'll take from Balwinder Kaur. Ma'am, please unmute yourself. Good evening, sir. That was a very wonderful talk. हाँ, मेरे कुछ क्वेरीज थी जो आपकी लास्ट स्लाइड में काफी कुछ जीनोम के पहले वाली स्लाइड्स में आई गॉट इट कि जैसे एथिकल इश्यूज हैं, लेकिन अगेन लाइक इन पंजाब in 2019 they had started to introduce this GM mustard. बहुत ज्यादा इसके ऊपर कैंपेन्स हुई कि वी आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट एंड सम एथिकल इश्यूज हैं और GM और ऑर्गेनिक में लेके कोई जीरो ग्राउंड बिल्ट हो जाए, बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. मुझे ये जानना है सर कि जो सीड है GMs का, दैट इज सेल्फ पोटेंट, That is, सर वो दोबारा से उगेगा कि सीड दोबारा से लेना पड़ेगा? आई मीन सीड्स जो है इसके रिवाइवल में है, इसकी अपनी पोटेंशियल है सर?
आपके दोनों क्वेश्चन एक्चुअली बहुत वैलिड हैं और मैं आपको करके आंसर देता हूं। पहले मैं इस चीज का आंसर देता हूं कि क्या वो सीड वैलिड है या कुछ ऐसे अपने कहा वायबल हैं या दोबारा उनको ग्रो किया जा सकता है। मैं ये चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं और मेरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स को ध्यान से सुनने के लिए प्लीज, कि हम जो फार्मर्स के फील्ड में ग्रो करते हैं या साइंटिस्ट लोग जो डेवलप करते हैं, वो दो तरह की किस्में होती है। एक होती है वैरायटी, एक होता है हाइब्रिड। ठीक है, वैरायटी होती है, वी कॉल इट एज ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, मतलब उसके जो सीड्स हैं वो हर साल आप सेव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। कम से कम 10-12 साल तक उसकी गुणवत्ता कम नहीं होती, तो तब तक मतलब या जब तक भी आप चाहें। इन ए वे वायबिलिटी का जहां तक सवाल है, आपको हर साल खरीदने की जरूरत नहीं है, इट्स ए वैरायटी। दूसरी किस्म जैसे मैंने आपको बताया वो होता है हाइब्रिड। वो हाइब्रिड में करीब 20 से 25% ज्यादा पैदावार मिलती है कंपेयर टू ए वैरायटी, और फार्मर्स उसको प्रेफर करता है, क्योंकि फार्मर को थोड़ा सा महंगा सीड खरीदने में अगर उसको 20 से 25% पैदावार या प्रोड्यूस ज्यादा मिलता है तो वो प्रेफर करता है। और नाउ द क्वेश्चन इज, वैरायटी जो है हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा बनाते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ग्रीन रेवोल्यूशनरी वैरायटीज का, और हाइब्रिड भी हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा बनाते हैं। और यही दोनों चीजें, वैरायटी भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से बना सकते हैं जिसको हम जीएम वैरायटी कहेंगे, और हाइब्रिड भी जीएम रूट से बना सकते हैं जिसको हम जीएम हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज, वैरायटी को आपको हर साल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसको सेव कर सकते हैं और खेत में लगा सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड को चाहे आपने वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा बनाया हो या जीएम रूट द्वारा बनाया हो, उसको हर साल खरीदने में ही फायदा है। टेक्निकली खरीदना ही चाहिए, फार्मर्स खरीदने में हैप्पी हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, ताकि उनको ज्यादा प्रोड्यूस मिले। यू नो, any farmer would like to have such hybrids which will produce, more than 25% of what they normally get through varieties. But the only question is, they should be available of that particular crop in which we want to grow. For example, we don't have much in case of pigeon pea, we don't have in case of wheat, many crops we don't have even hybrids available. But वो भी एक choice है, कोई variety grow करना चाहे, कोई hybrid grow करना चाहे। But the question is, आप चाहे hybrid किसी भी रूट से लें, आपको वो दोबारा से सीड खरीदना ही पड़ेगा। तो ये कंट्रोवर्सी कोई है ही नहीं, इसको तो बिल्कुल वी शुड ब्रिंग इट टू अ रेस्ट। एंड आई वुड रिक्वेस्ट मैडम डॉक्टर बलविंदर कौर, आई थिंक टू काइंडली प्रोपागेट दिस मैसेज मोर एंड मोर, अगर मेरी बात उनको ठीक लगी तो। आर यू देयर प्लीज डॉक्टर बलविंदर कौर? यस, शी इज देयर। तो अगर आपको मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज बताइए, और अगर सहमत हैं तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को जैसे मैंने आपको क्लियर किया, अगर समझ में आया और आप सहमत हैं तो इसको आगे उसी हिसाब से प्लीज बताइए लोगों को, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर, एक्चुअली मैंने म्यूट कर लिया था अपने आप को, सॉरी। एंड रियली दैट्स सो इनलाइटनिंग, बिकॉज सर मेरी एमएससी बायोकेमिस्ट्री में है और पीएयू से हूँ मैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मुझे ये लगता था वहां पे जो हम बातें करते होते थे कि कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन होती है या एक्सप्लॉयटेशन लेवल पे आ जाता है सीड बार बार। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। as a science, sorry sir, as a science student I always felt ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਚੋਇਸ। I mean, ਫੂਡ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਰ ਅਗੇਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਥੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲ ਦ ਸਲਾਈਡਸ ਵਰ ਬੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਹ the good points ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। and some of there it could be like some of ਕੁਛ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ sir, definitely we are going to have it. GM, your points are very well taken, I must appreciate those, and I told you whatever the truth is based on science, and that's what I said. The purpose of science is to perceive truth, is to really seeking truth, and that's what I have shown with evidences. Not only me, anybody will talk about it. And you also touched upon the point of organic farming. Let's be very clear about it, please. In that case, again, what is organic farming? First of all, organic farming
cannot be taken up in a large, vast country size we have in India. There could be some pockets. People could be interested. Fine. Let's not stop it. Let's talk about it and talk about it even more. But what I'm trying to relate, organic farming, even with genetically modified crops, because what is the purpose of organic farming? If you see fertilizer cut pao, the agriculture cut pao ya na pao, if you can achieve this goal through genetic modification, for example, you reduce the quantity of pesticide spray, or you make plants more efficient for taking up these fertilizers, naturally you can then combine the two. Yes, sir. This is it. This is what I. We have got only one thing in the world. No, in India we have got conventional breeding, modification. Now genome editing. Fortunately, thanks to government, big thanks actually speaking as scientist. So excited, like a child, I was jumping up and down and sending message across to my friends. See that memorandum allowing some of those categories of genome editing as non-GMOs, exemption given from biosafety. So that means that science is that. Therefore, we have a wider choice, and we should all together propagate the message based on science, as much as possible. Definitely, sir. We definitely do that. Thank you, sir. Thank you so very much, sir. And I will talk to you later about it, how much you've done it, please. Sorry. Thank you, Dr. Balvinder, for joining. So I think it's time to wind up. Thank you, sir, for this wonderful interactive session. Now I request Shri Shiraj Batish, the DGM PGSC, to propose vote of thanks. Sir, please. No more questions? I don't think so there are any other questions. No more hand raised. Okay. Sir, your presentation was so wonderful that most of the people have understood and taken the major points from your thing. Dr. Lalin, I'm thankful for giving me this opportunity to place a vote of thanks. Sir, this was a great honor to you have as a speaker. Sir, you have provided a great insight to the GM crops in detail about the benefits and the challenges, and making this technical, complex topic very simple, so that the student levels and us who are not that much into the genetics don't understand, we are able to make it out what are the actually GM crops and how they are going to benefit us. And basically in last you have removed those myths and fears about the GM crops. That is very good. I think we Science City should also take this effort to promote about how the GM crops are beneficial to the public, to the farmers, and for the health of all population. Really, I'm thankful for sir for this wonderful talk and sparing out the time from your busy schedule. I am very much grateful to our worthy Director General, Dr. Nilima Jairat. She has been always encouraging and motivating us to organize such events, and has taken the Science City to the next level for the science communication. Thanks a lot, ma'am. And really, we are thankful to you, ma'am. I'm also very much thankful to our participants, students, teachers, parents, whom without any program can't be successful. They are basically, I'm thankful to them. They are always coming up, and I'm thankful to the students and participants who ask the questions. Basically, that makes us a more interactive program, which actually we want, that the people should come up and put their queries. I'm thankful to all the participants, and specifically to who the persons have come up and asked the questions. Thanks a lot. I'm also very much thankful to our organizers, Dr. Loveleen, then Kamal and other technical team, marketing team, who had put a lot of efforts to organize this event. I'm lot of thankful. I'm also very much thankful to other media persons who are always there to help us in promoting and creating awareness about the topics through their own media tools. Thanks a lot. Again, I'm thankful to sir, to you. Thanks a lot. Thanks for taking out this time for us. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so very much, sir. It was wonderful. Thanks again to Dr. Neelam Jairat for inviting me, and Dr. Loveleen for answering all my questions, and I kept on disturbing her. No, sir. The honor and the pleasure is all ours, sir. Yes. Thank you so much it was a really lucid talk. And as Shiraj said, precisely the objective of inviting Dr. Bansal was to make a very, very complex subject so very simple that when we talk about building a shared future
for all. I think these kinds of talks are the ones which we need to imbibe and we need to listen to and we need to follow in our lives. So thank you so much, sir, for our 17th action on biodiversity. Dr. Levneen, there are some questions in the chat box, which you can, if you could kindly share me through email. Okay, sure, sir. I'll be sharing with you. I'll be happy to answer through their emails or whatever it is, if you can provide. Sure, definitely, sir. I'll share with you. I won't do anything. Thank you, sir. Thank you very much. It's a pleasure. And wish you all the best for 22nd May for culminating this program with all flying colors. Thank you. Thank you so Thank much. you. In person.